Welcome to the day 4, guys. So, from today, we are going to solve graph problems. So, first, let's understand what graph is. We are not going to get into a quite big description of what a graph is and a lot of this. We'll just understand a basic structure. And in this video, I will also use some Hindi language. As in my previous video, I was just talking in English, but in this video, I would use Hindi because रीच बढ़ानी है मुझे रीच। तो रीच बढ़ाने के लिए मैं हिंदी में भी बात करूँगा और इंग्लिश में बात करूँगा, दोनों में बात करूँगा। सो पहले समझते हैं ग्राफ है क्या। ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से हम ये समझते हैं कि जो सीधा नहीं है ना, इट्स नॉट अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, इट्स अ रैंडम स्ट्रक्चर। कुछ भी कहीं भी हो सकता है, नॉन लीनियर है। अब ग्राफ की जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है कि ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। But what I like to say is a graph is a collection of nodes, and each node is connected via edge, and we can traverse in that particular structure, right? अब ग्राफ बेसिकली दो तरह के होते हैं। जो आप लोग के सामने ये बना हुआ है, दिस इज अ डायरेक्टेड, ओ सॉरी, अनडायरेक्टेड ग्राफ। दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसी ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे ऐसे एरोस बना दूँ, दिस बिकम्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। That's the basic difference between a directed and undirected graph. A directed graph has edges and direction arrows. A undirected graph does not have any direction arrows. You can traverse in both direction. It's a unidirection, but in a directed graph, you have to traverse only in the direction where the arrow points. तो यानी अगर ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ है, अब मैंने एक एज ऐसे बना दी इन दो नोड्स के बीच में। सिंस इस एज में कोई भी डायरेक्शन का एरो नहीं है, तो ये एक अनडायरेक्टेड है। तो मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। बट इफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैड दिस एरो लाइक दिस स्ट्रक्चर, तो मैं सिर्फ इस नोड से इस नोड जा सकता हूँ। ओके, ग्रेट। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक डायरेक्टेड और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में अंडरस्टैंडिंग। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है किसी भी ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ग्राफ एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन हमें उसे फिर भी ट्रैवर्स करना होता है, मूव अराउंड करना होता है। तो अब इस ग्राफ में हम मूव कैसे करेंगे, और मूव करने से पहले हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें मूव करना कहाँ है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, it's a basic structure in which we store from which particular node what nodes can be reached। यानी इस नोड से, यानी एक किसी नोड से हम कौन से नोड पे पहुंच सकते हैं डायरेक्टली विदाउट ट्रेवर्सिंग मोर देन अ सिंगल एज। विदाउट ट्रेवर्सिंग मोर देन अ सिंगल एज। ओके, अगर हम सारे एजेस वो जिससे हम पहुंच सकते हैं वो तो एक ट्रैवर्सल हो जाएगी, बट वी ओनली कंसीडर ऑल द नोड्स दैट कैन बी रीच फ्रॉम वन नोड वाया वन एज। ओके, तो जैसे अगर ये नोड 1 है और यहाँ पे 2 और 3 है हम लोग के पास। नाउ what the adjacency matrix of node 1 will hold would be 2 and 3, that from node 1 we can reach node 2 and 3 by traversing a one edge। so generally मैं जो इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता हूँ, सो इन सी प्लस प्लस आई यूज़ अनऑर्डर्ड मैप। Unordered map, and here I store it in a vector। Okay, so now this is a structure that I generally use to represent a unordered matrix। so ये हम लोग का ये एज हो गया, तो ये नोड मैंने यहाँ पे, ये नोड हो गया मेरा नोड। और ये जो वेक्टर है इसमें मैं अपनी सारी एजेस को स्टोर कर ले, सॉरी, सारे वर्टिसेस को स्टोर कर लेता हूँ जहाँ मैं रीच आउट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर नोड से, जो इन अ वेक्टर स्ट्रक्चर। तो एक्सेस करने में आसान रहता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज वर द बेसिक पर्टिकुलर थिंग्स। अगर आपको ये नहीं समझ में आई मेरे एक्सप्लेनेशन में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके आर्टिकल्स अटैच कर दूंगा, सो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। नाउ लेट्स get to the main task, that is BFS and DFS। We would be tackling BFS and DFS in this video, and we will working on the next algorithms in the next video। We will be working on this Castra, Floyd Warshall, and DSU, and minimum spanning trees, all these kind of algorithms in the graph topic, and we will try to solve as much as we can solve, or as many problems that we can solve in a week।
I will give a whole week to graph, and from today onwards we will start that. So first let's understand what is DFS. DFS का full form है Depth First Search, right? DFS का full form है, ओके ग्रेट, डीएफएस का फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, अब इस डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है? अगर आप लोगों ने ट्री के वीडियो मेरे पहले के देखे हैं तो मैं ये गेस कर रहा हूँ कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन सब के बारे में मालूम होगा, राइट? अब अगर आपको इन सब के बारे में मालूम है तो ये सारी ट्रैवर्सल जो हैं, ये सारी ट्रैवर्सल डीएफएस ट्रैवर्सल के अंदर आती है। ऑल दीज ट्रैवर्सल आर डीएफएस ट्रैवर्सल। ओके ग्रेट। अब डीएफएस ट्रैवर्सल कहती क्या है? डीएफएस ट्रैवर्सल ये कहती है कि एक नोड को पकड़ो, pick a single node and go till the deepest depth from that particular node that you can reach. अब जैसे हम लोग का ट्री का स्ट्रक्चर होता है, हम एक ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी दिस, ये स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, और दिस इज दिस नोड। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्स्ट, चलो फिर से समझते हैं जरा सा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को फिर से समझते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अंतर, एक ट्री में ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे देन अ ग्राफ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ राइटिंग अ बी एफ एस एंड डी एफ एस इन अ ग्राफ एंड इन अ ट्री। तो ये दो ट्री के स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एक ये बनाया, इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते, सॉरी ना, लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, राइट? तो हम लोग के पास दो ट्री हैं, राइट? अब इस ट्री में ट्रैवर्स करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होगा डीएफएस, एक होगा हमारा बीएफएस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएफएस एंड व्हाट इज बीएफएस। सो इन डीएफएस आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड। अब मैं इस नोड से कैसे जा सकता हूँ? सो डीएफएस में मैं इस नोड को स्टार्ट करूँगा, इस अगले चाइल्ड नोड पे जाऊँगा, फिर इस नोड पे आके मैं इसके चाइल्ड नोड पे जाऊँगा। सो दिस इज़ माई डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर मैं इसी में बी एफ एस लगा रहा होता, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस नोड, आई विल विजिट दिस नोड, एंड देन आई विल विजिट दिस नोड। ओके, तो अब इनको विजिट करने का स्टाइल अलग है, तो इनको स्टोर करने का स्टाइल अलग है। DFS uses stack whereas BFS use queue। ऐसा नहीं कि DFS आइटरेटिव नहीं हो सकता और मुझे स्टैक के सिवा किसी और स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और BFS सिर्फ क्यू से इम्प्लीमेंट होगा। BFS सेट से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, और भी तरीके हैं BFS को इम्प्लीमेंट करने के, ऐसे ही DFS को इम्प्लीमेंट करने के भी अलग तरीके हैं। बट द मेन डेटा स्ट्रक्चर दैट वी यूज विद दिस प्रॉब्लम्स आर स्टैक विद DFS एंड अ क्यू विद BFS। अब समझते हैं ऐसा क्यों। अब हमें इस स्ट्रक्चर में डेप्थ में मूव करना है, तो मैंने इस नोड को विजिट किया, लेट जस्ट से इट्स नोड वन। तो मुझे नोड वन को विजिट करना है, तो मैंने नोड वन अपने स्टैक में पुश करा लिया। अब मैं नोड वन से नोड टू जाना चाहता हूँ, दिस इज माई नोड टू, लेट से। तो मैं नोड टू को अपने स्टैक में विजिट करूँगा, ठीक है, यानी स्टैक में पुश करा दूंगा। अब आफ्टर विजिटिंग नोड टू आई वॉन्ट टू विजिट नोड थ्री, तो मैं नोड थ्री को भी अपने स्टैक में विजिट करा दूंगा। ओके, आफ्टर विजिटिंग नोड थ्री अब मैं कहीं जा नहीं सकता। नाउ इट विल बी अ रिटर्न कॉल। हम लोग जनरली यहाँ पे रिटर्न कॉल लगा देते हैं कि वी कांट गो फर्दर देन रिटर्न। अब रिटर्न कॉल में होगा क्या, ये थ्री स्टैक से पॉप आउट होगा। अब हमारे पास फिर स्टैक के टॉप में क्या बचा, टू। अब टू के अगले डेप्थ में हम कहाँ जा सकते हैं, वो ये नोड। ओके, तो हम ऐसे ही नोड को विजिट करेंगे। अब ये नोड फोर है, तो नोड फोर पुश हो जाएगा, फिर नोड फोर पॉप आउट होगा हमारे स्टैक से, और फिर हम नोड टू पे रीच आउट दोबारा करेंगे। अब नोड टू से हम और कहीं नहीं जा सकते, तो नोड टू पॉप आउट होगा हमारे स्टैक से। अब ये समझ लीजिए नोड फाइव है। इफ दिस इज नोड फाइव देन वी विल अगेन डू आर डी एफ एस। अब हमारा नोड फाइव स्टैक में पुश हो गया। So you can just create a stack like this. Now we have node 1 and now we have node 5 here. And in a similar fashion हम लोग इसके लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेंगे, फिर राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे, फिर हम नोड 5 को पॉप आउट करेंगे, एंड देन वी विल रीच अगेन द टॉप, दैट इज नोड 1, एंड देन वी विल पॉप आउट नोड 1 again, right? Now what if I was using queue to store this structure? Now let's just try to store this in a queue instead of in a stack. देखो, एक स्ट्रक्चर हम क्यों चूज कर रहे हैं ये भी समझना चाहिए ना। अब अगर मैं इसे क्यू में स्टोर करता हूँ, तो मैंने नोड में पुश करा दिया, ओके, क्यू है। अब मैं अगला क्या पुश कराऊंगा, तो मेरा नोड टू है, राइट, मैंने नोड टू पुश करा दिया। ओके, अब हमारे पास नोड थ्री है, मैंने नोड थ्री पुश करा दिया, ग्रेट। अब नोड थ्री के बाद मैं नोड थ्री के आगे तो नहीं जा सकता। अब मुझे नोड थ्री को पॉप आउट करना है, बट दिस इज़ अ क्यू, एंड क्यूज में हम सिर्फ फ्रंट से रिमूव कर सकते हैं, बैक से नहीं। अगर डी क्यू की बात कर रहे हैं तो बात अलग होगी, लेकिन वी आर डिस्कसिंग मेनली ऑफ क्यू। सो इफ़ वी आर यूजिंग अ क्यू, तो मैं फ्रंट से तो पॉप करा सकता हूँ,
बैक से नहीं करा सकता, तो मैं नोड 1 को तो नहीं रिमूव करा सकता, इसलिए हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के साथ नहीं यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ स्टैक विद डीएफएस। नाउ कम्स डाउन टू बीएफएस। ओके, अब बीएफएस में हमें नोड विजिट कराने, लेट जस्ट से दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन, वी कैन जस्ट call it 4 5 6 7. Okay, so for node 1 I push node 1 in my queue. Great. Now after I visited node 1, what I can reach is node 2 and 3. तो node 2 और 3 को ऐसे समझो कि हम एक साथ में ही क्यू में पुश करा दे रहे हैं, एक के बाद एक पुश होंगे, लेकिन ऐसे समझो कि ये एक लेवल है, हमने इसे एक ही बार में पुश करा दिया अपने क्यू में। सो एज सुन एज आई पॉप आउट नोड 1, एज सुन एज आई रिमूव नोड 1 आउट ऑफ माई क्यू, हम लोग फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं तो नोड 1 रिमूव हुआ, और उसके बाद मैंने पूरा लेवल पुश करा दिया, यानी जितने भी नोड एट फर्स्ट लेवल थे, दिस वॉज माई जीरो लेवल, दिस वॉज माई फर्स्ट, दिस वॉज सेकेंड। सो एज सुन एज आई pop the node of zero level, I will push all the children that were on the level 1. Okay, so node 2 और node 3 मेरे क्यू में आ गए। ग्रेट। नाउ हमारे क्यू में नोड 2 और नोड 3 हैं, ऐसे ही हम दोबारा नोड जो लेवल 2 पे हैं, जितने भी नोड्स हैं उनको एक साथ पुश करा लेंगे, होंगे एक साथ नहीं, वो बात मुझे पता है, लेकिन जस्ट कंसीडर दिस, हम लोग एक पूरे लेवल को विजिट करना चाह रहे हैं, तो मैं पूरा एक लेवल अपने क्यू में डाल देता हूँ। जैसे नोड 2 पुश होगा, पॉप आउट होगा, वो अपने चिल्ड्रन को पुश कर देगा, ऐसे ही नोड 2 3 जब पॉप आउट होगा अपने चिल्ड्रन को पुश कर देगा, लेकिन जब ये पॉप आउट हो जाएंगे तो मेरे क्यू में क्या बचेगा, सिर्फ ये इस लेवल के नोड बचेंगे, राइट। और यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है हमारी, और यही बीएफएस ट्रैवर्सल है। अब ये ट्रैवर्सल एक ट्री के ऊपर थी, अब ये ट्रैवर्सल अगर हम ग्राफ के ऊपर लगाएंगे तो हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका बारे में हम बात करेंगे कि ग्राफ की ट्रैवर्सल ट्री के ट्रैवर्सल से थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी ऐसा कुछ स्पेशल डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ा सा स्टोरिंग और मैनेजिंग का झंझट बढ़ जाता है, नथिंग एल्स। So let's just say this is a directed graph that I have. Okay, this is my directed graph. This is my node 1, this is my node 2, this is my node 3 and this is my node 4. Great. और मैंने एक स्टैक बना लिया, ठीक है। मैंने नोड 1 से स्टार्ट करी, आई स्टार्ट माई DFS फ्रॉम नोड 1, आई पुश नोड 1 इन माई स्टैक। Okay, great. After I visited node 1, I know from node 1 I can reach node 2. I push node 2 in my stack. Great. From node 2 I can reach node 3. Great. I push node 3 in my stack. From node 3 I can't reach any further, so I will just pop node 3 out of my stack. So node 3 is popped out. Okay, great. From node 2 again we have at टॉप, हमारे टॉप में फिर से नोड 2 है, तो हम स्टैक में गए, हमने कहा नोड 2 से नोड 3 तो हम रीच आउट कर चुके हैं, पॉप हो चुका है। अब हम कहाँ गए, नोड 4 पे गए, तो वी जस्ट पुश नोड 4 इन आवर स्टैक। ग्रेट। नोड 4 से हम नोड 1 दोबारा जा सकते हैं। सो देयर इज नो कंडीशन सो फार, क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्री की डीएफएस डिस्कस करी थी, और ट्री की डीएफएस में क्या एक कंडीशन थी, एक ही कंडीशन थी कि इफ़ वी कांट गो एनी फर्दर वी विल जस्ट पॉप आउट दैट, हम उसे अपने स्टैक से रिमूव कर देंगे, विल पॉप दैट आउट ऑफ अ स्टैक। ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन इज, ये कंडीशन अभी तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, फ्रॉम 4 वी कैन रीच 1 अगेन, राइट। सो मैं अपने 1 को फिर से पुश करा दूंगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज 1 will again see further that it can reach 2, that it will again push node 2 and then again it would be 3. Now 3 would be pop out from the stack because it can't reach any further, but again node 4 will push। तो अब क्या हो गया, एक एंडलेस साइकिल में हम फंस गए। अब एंडलेस साइकिल में फंसने से बचने के लिए हम एक ग्राफ में जनरली यूज़ करते हैं एक विस्टेड एरे का, विस्टेड एरे और विस्टेड वेक्टर, वॉट एवर यू लाइक टू से, मैं विस्टेड वेक्टर बोल लेता हूँ, विस्टेड एरे बोल लीजिए। और ये एक विस्टेड एरे, तो विस्टेड एरे का काम क्या होता है कि हम एक जब ग्राफ ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं तो कहीं हम साइकिल में ना फंस जाएं, तो कि हम बार बार सेम साइकिल में ही विजिट करते रहें और सारे नोड्स को ना विजिट कर पाएँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक विस्टेड एरे का यूज़ करते हैं। तो अब इसका काम कुछ नहीं होगा, हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जैसे जैसे मैं उस नोड को विजिट करता जा रहा हूँ मैं उसे विजिटेड एरे में भी पुश करता जाऊँगा, और उसके बाद एक कंडीशन और है, उसको हम चेक कर लेंगे, अभी बताता हूँ। सो एज सुन एज आई कम एट नोड 1 आई पुश इट इन माई एरे दैट नोड 1 इज विजिटेड। नाउ go to node 2. Okay, I push node 2 in my visited and node 2 say let's go to node 3. Now I reach node 3 again. Now node 3 says I can't go any further, pop it out of the stack. Now we have node 2 at the top of the stack again. From node 2 I can go to node 4. I push it in my visited vector, and from node 4 I can go to node 1 again.
बट मैं नोड वन पे एक कंडीशन लगा दूंगा, यानी मैं अब एक नई कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। किसी भी नोड पे विजिट करने के लिए एक कंडीशन होगी कि वो पहले से विजिटेड ना हो। इफ नोड वन इज विजिटेड अगेन देन वी कांट गो एनी फर्दर, जस्ट पॉप द नोड फोर आउट ऑफ माई स्टैक। सो नोड फोर पॉप आउट हो जाएगा। अब नोड टू पे पहुंच जाएंगे, अब नोड टू से हम कहीं नहीं जा सकते तो नोड टू भी पॉप आउट हो जाएगा। फिर सिमिलर फैशन में नोड वन से भी हम कहीं नहीं जा सकते तो नोड वन भी पॉप आउट हो जाएगा हमारे स्टैक से। ओके ग्रेट। अब ये थी हमारी एक सिंपल डीएफएस, बहुत सिंपल डीएफएस है। इससे ज़्यादा सिंपल डीएफएस कुछ नहीं होगी। अब इसका एक सिंपल सा कोड देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। ओके ग्रेट। I need to buy a tab. I need to buy a tab. That's first priority that I have right now. So let's just create a void DFS kind of code. हमारे पास DFS है, उसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या पास कर रहे हैं, हम एक स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस नोड इज नोड वन, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ नोड, लेट्स जस्ट कॉल इट नोड, and I will have adjacency matrix, so let's just call it at adj, and after that what I will need more is this listed array. Okay, so I will have a listed array. Okay great. What I am having is a, okay great, why this uh, such a pain. Okay, this is visited array. Great. Now I have a visited array and this. Now as soon as I visit a node, I come at node 1. What I will do is push this node, or I can mark this as visited using a boolean array. मैं एक boolean बना सकता हूँ, boolean array बना सकता हूँ। जैसे जैसे जिस node को मैं visit करूँगा मैं उसे true mark कर दूंगा, that I have already visited this node, mark this node as true. Okay, so I will mark this node as visited node. It has been marked as true. Great. I'm not using bracket right now because it becomes quite a hectic job because of managing brackets in this particular sketch code. Okay, so अब इस विजिट करने के बाद for auto x will that will use adjacent of this node। मैं भाई इस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको विजिट करना चाहता हूँ वन बाय वन। इफ नॉट विजिटेड, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी कि वो नोड विजिटेड ना हो तभी मैं भाई उसको विजिट करूँगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज नथिंग, जस्ट कॉल द डीएफएस अगेन फ्रॉम नोड दिस and my adjacent and the visited, right? Now this is a complete DFS that we will use. This is the most basic DFS code that we will be using in our problems. Okay, so this is our DFS. Now let's try to understand what is BFS. Same graph बनाते हैं, we have the same graph and similar structure, and this is node 1, this is node 2. Let's just erase this node 3, this pretty crap. Okay, this is node 3, this is node 4, there is this edge from node 4 here, and we go node, and this is there, and this goes here, right? हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, सब है। अब नोड वन से अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएं, इसे ट्री की तरह देखने की कोशिश करिए कि अगर मुझे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगानी है तो अगर ये ट्री स्ट्रक्चर है तो नोड वन के पहले लेवल में कौन से नोड आते हैं। अब सिंस इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ, इसका एक ही लेवल है, वो है ये नोड टू। तो मैंने सबसे पहले अपने क्यू में क्या पुश कराया, नोड वन। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नोड वन, सो आई इनिशियली पुश नोड वन इन माई क्यू। Now from node 1, as soon as I push node 1, I will start BFS and I will pop this node 1 out of my queue, and I will ask from this particular node 1 what are the all the nodes of the second level, यानी इस नोड के बाद और कौन से नोड हैं जो प्लस वन लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा है, वो है नोड टू। मैंने नोड टू को क्यू में पुश कराया एंड देन I will just store it in my queue. Okay, great. Now from node to what with the labeled order traversal. ऐसे कौन से नोड हैं जो प्लस वन करने पे मैं नोड टू से रीच आउट कर सकता हूँ। सो नोड थ्री एंड फोर आर द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो क्या होगा, जैसे ही मैं नोड टू को पॉप आउट कराऊंगा मैं नोड थ्री को भी पुश करा दूंगा और नोड फोर को भी अपने क्यू में पुश करा दूंगा, राइट। अब क्या हो गया, नोड टू के बाद नोड थ्री और नोड फोर पुश हो गया मेरे क्यू से, ग्रेट। अब नोड थ्री से मैं कहीं रीच आउट नहीं कर सकता, सो आई विल जस्ट पॉप इट आउट ऑफ माई क्यू, ग्रेट। नाउ आई एम स्टैंडिंग एट नोड फोर, फ्रॉम नोड फोर आई कैन अगेन प्लस वन एंड रीच नोड वन अगेन, राइट। अब प्लस वन करने में नोड वन पे मैं अगेन रीच आउट कर सकता, मैंने नोड फोर को पुश पॉप आउट करा दिया और नोड वन अगेन पुश हो गया, तो क्या हो गया, फिर से साइकिल आ गई। तो
हमारे BFS में भी हमें एक विजिटेड एरे यूज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कीप अ ट्रैक दैट वी डोंट विजिट अ विजिटेड नोड अगेन। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, नथिंग डिफरेंट, राइट। अच्छा, अब देखो, इसके जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई दो डायरेक्ट प्रॉब्लम है नहीं लीड कोड पे जो सिर्फ BFS और DFS ट्रैवर्सल के बारे में हो। इस वजह से हम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, and I will try to start from the most basic problem that I know to the most advanced that I can go so far. I will try to keep this video as long as possible because I will try to complete this task also, because मैं खुद के लिए भी ऐसे complete कर रहा हूँ। तो let's just start with a basic problem. What can be that basic problem? Let's just go here. Okay, what we have, graph, right? Da, 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 da. Uh, let's just start with, अगर हम लोग साइकिल डिटेक्शन करें। ओके, साइकिल डिटेक्शन की प्रॉब्लम लीड कोड पे है। आई डोंट थिंक कि मैंने साइकिल डिटेक्शन की प्रॉब्लम लीड कोड पे कभी देखी है। ओके, प्रॉब्लम क्लोन ग्राफ कोड शेड्यूल, लेट्स जस्ट फिल्टर इट आउट ऑफ difficulty. Okay, find the town judge, find the center of star graph, find a path existing graph. Okay, this can be a good problem. Find a path exists in a graph, right? ये एक अच्छी प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिक प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, राइट। So basic problem, find if a path exists in a graph. Okay, क्वेश्चन क्या है? There is a bidirectional graph with n vertices, where each vertex is labeled from 0 to n minus 1. The edge in the graph are represented as a 2D integer array edges, where each edge I is equal to ui vi denote a bidirectional edge between vertex ui and vi. Every vertex pair is connected at most one edge by at most one edge, and no further vertex has an edge to itself. Okay, you want to determine if there is a valid path that exists from source to vertex destination. Great. Given the edge and the integer n, source and destination, return true if there is a valid path from source to destination. Okay, great. So this is the most basic problem that I am thinking of solving. हम इसे BFS DFS दोनों से सॉल्व करेंगे। ग्रेट। ओके, तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल क्या है? ओके, हम लोग अपना पहले एग्जाम्पल को लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल को नहीं। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज 3, राइट। और 0 1 2, we have 0 here, 1 here and 2 here. great. सिंस एजेस बाई डायरेक्शनल हैं तो डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं। हमें नोड 0 से स्टार्ट करना है और नोड 2 पे रीच आउट करना है। तो हम लोग की एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं कि 0 से कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं और 2 जा सकते हैं। 1 से कहाँ जा सकते हैं, 1 से 0 जा सकते हैं और 2 जा सकते हैं। और 2 से कहाँ जा सकते हैं, 0 जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं। ग्रेट। ये हमारी बेसिक एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई। और मेरी स्केचिंग और ड्राइंग के लिए आई एम ऑलरेडी सॉरी बिकॉज आई एम यूजिंग अ माउस। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ टैब। आई ऑलरेडी सेड आई एम थिंकिंग ऑफ बाय अ टैब। I'm just keep repeating it so I don't procrastinate anymore. Okay, so लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डीएफएस। हम लोग डीएफएस से स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग नोड 0 पे स्टैंड कर रहे हैं। ग्रेट। नाउ आई विल पुश नोड 0 इन माय स्टैक। ओके, ऑल्सो आई विल मार्क नोड 0 एज विजिटेड इन माय विजिटेड array. Node 0 is visited. Okay, great. Now node 0 has been visited. What can be reached from node 0? Node 1 and node 2. So node 1 I have already marked first in my adjacency matrix. So I will go to node 1. Okay, great. I will go to node 1. I have reached at node 1. Now I'm standing here. Now from node 1 where I can reach to node 0 and node 2. Now node 1 is already visited. It has been marked visited. Sorry. So from node 1 where I can reach node 0 and node 2. So where I want to go, so there's in my adjacency matrix, there's node 0 first. So node 0 is first. I will try to go to node 0, but node 0 is already there in my visited. So I can't go to node 0. Okay, great. Now I reach node 2. Okay. Now I reach node 2. I mark node 2 as visited. Great. Now since I have reached node 2, I will just let
let's just put a condition that if I have reached node 2 or the last node that I want to reach, then return the call, return a true, because if I reach that node, return true. कोड वहीं स्टॉप हो जाए कि जैसे मैं नोड 2 पे रीच आउट करा, मैं यहाँ पे ही तुरंत जैसे मैंने नोड 2 आया और विजिटेड हुआ, मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। मैं एक कंपैरिजन लिख दूंगा कि जैसे ही मैं मेरा जो नोड वैल्यू है जिस नोड पे मैं हूँ करंटली, अगर वो नोड वैल्यू लास्ट नोड वैल्यू के इक्वल है तो जस्ट रिटर्न ट्रू। और अगर ये कंप्लीट जैसे नोड 2 है, ओके, नाउ लेट्स जस्ट कंसीडर फॉर दिस केस, जो सेकंड केस है इनका 0 1 2 and 3 5 4, 0 1 2 3 5 4, ओके। सो दिस इज द 0, this is the 1, this is 2, and just say this is 3, this is 5, and this is 4, ओके। तो अब नोड 0 से मुझे कहाँ रीच करना है, नोड 5 पे। नोड 5 कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, विजुअली हम देख पा रहे हैं कि देयर इज नो एज और देयर इज नो पाथ दैट वी कैन टेक फ्रॉम नोड 0 टू रीच नोड 5, ओके, great. So now what we will do, we will start a basic DFS, okay। I will start a DFS from node 0, मैंने node 0 को पुश करा अपने स्टैक में, okay। Now from node 0 where I can reach node 1, okay, node 1 push हुआ मैं स्टैक में। Can I go any further from node 1? No, I can't go any further from node 1, so pop node 1 out of my stack। और ये विजिटेड में भी जाते जा रहे हैं, तो जैसे 0 विजिट हुआ और 1 विजिट हुआ, ग्रेट। उसके बाद अब क्या हुआ, नोड 1 पॉप आउट हो गया। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगला नंबर कौन सा है, वो है नोड 2। तो नोड 0 से कहाँ जाएंगे, नोड 2 पे जाएंगे। नोड 2 कहाँ गया, हमारे स्टैक में पुश हो गया। अब नोड 2 से फर्दर कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो नोड 2 क्या हुआ, पॉप हो गया। अब हमारे स्टैक के टॉप पे बचा क्या, नोड 0। फ्रॉम नोड 0 कैन वी रीच एनी फर्दर, नो वी कांट रीच एनी फर्दर, सो नोड 0 भी पॉप आउट हो गया। हम लोग का विजिटेड एरे में कभी हम लोग नोड 5 पे रीच आउट नहीं कर पाए, हम लोग की पूरी साइकिल खत्म हो गई और रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स। हमें इन एजेस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड टू चेक दीस एजेस। हम लोग को इनके ऊपर कोई डीएफएस नहीं करना, हमें एक डीएफएस स्टार्ट करनी है नोड 0 से, और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं नोड 0 से, सिर्फ हमें ये चेक करना है। अब इसका बेसिक कोड लिखूंगा मैं, जैसा मैंने डीएफएस का कोड बताया था, मैं बिल्कुल वैसा कोड लिखने की कोशिश करूँगा, as similar as that। Now what I will do is, just because it's a check kind of function, I will use bool instead of void। I will write a DFS again here। What I am passing is the source int destination, ओके। सो दिस इज़ द एजिस। तो मैं इसको एक अपने मैप में कन्वर्ट कर लूँगा, वो अनऑर्डर्ड मैप जैसा मैंने बताया था। इंट कॉमा वेक्टर इंट, ग्रेट। इसका नाम दे देते हैं एमपी, और एक और वेक्टर बना लेते हैं, वो है वेक्टर वेक्टर बूल बना लेते हैं इंट की बजाय, एट द रेट विजिटेड, ग्रेट। वी हैव विजिटेड बूल एंड एवरीथिंग द। सो नाउ लेट्स गो। अब हम लोग सोर्स है, हम लोग के पास डेस्टिनेशन है। सो इफ माई सोर्स इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, देन रिटर्न ट्रू। यानी हम लोग अगर जो लास्ट नोड है उस पर पहुंच चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू चेक एनी फर्दर, जस्ट रिटर्न ट्रू एंड स्टॉप द कॉल स्टैक, ओके, ग्रेट। नाउ इफ विजिटेड नोड, अगर जिस नोड पे हम लोग करेंटली स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज रिटर्न फॉल्स। अच्छा, रिटर्न फॉल्स क्यों, अच्छा आप खुद ही सोचिए, अगर नोड 1 पे हैं और मैं नोड 1 पे रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अच्छा सोचते हैं साइकिल आया मेरी, और नोड 2 मुझे नहीं रीच करना था, नोड 5 मुझे रीच करना था। मैं नोड 2 पे गया, नोड 1 में पहले विजिटेड था, मैं नोड 1 पे दोबारा गया, मैंने कहा अच्छा मैं नोड 1 पे तो दोबारा आ गया हूँ, अब क्या हुआ, अब मैं क्या करूँ। अब मैं अगर रिटर्न ट्रू कर दूंगा, सो व्हाट इफ आई जस्ट रिटर्न ट्रू, मेरा तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा ना। सो जस्ट आई नीड टू रिटर्न फॉल्स, यानी मैं फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पाया, मैं एक साइकिल में फंस गया। आई एम गेटिंग स्टक in a cycle, okay, great। And just comment here, if I reach
the last node, then return true. Okay, great. Now what I need to do is do a basic DFS for auto X, that will go in adjacency. Yeah, I called it, okay, I called it MP, right? That's all. In MP, go for a traversal. If I don't think I need to even do that, I'm already doing it here, so I don't need to do that check here. You can just do a DFS, simple DFS from here again. So I will do a DFS. Okay, I will do a DFS from X to my, where I have to do, I have to do destination, and what I have to pass, that's the MP, and then it's the visited, great. Okay, and now what will happen is that this is a call stack. अच्छा, होगा क्या, जैसे ये है, जैसे नोड 2 हमने विजिट कर लिया नोड 1 के बाद, तो नोड 2 रिटर्न करेगा ट्रू नोड 1 को, और उसके बाद नोड 1 रिटर्न करेगा ट्रू नोड 0 को। इसलिए इसको एक इफ स्टेटमेंट में रैप करना पड़ेगा हम लोग को, कि ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है ना, इफ डीएफएस, इफ डीएफएस इज ट्रू, अगर जो हम लोग डीएफएस कर रहे हैं वो ट्रू है, यानी जो अरे यार मुझे लिखना ही पड़ेगा ऐसे, सो जस्ट chill. Okay, I'm standing at node X. I need to go to destination. Destination. I have MP and also I have visited. Great, visited, right? Now what will happen is just return true. If we are getting a true here, then return true. And if the call stack was exhausted, just return a false and don't do nothing. Okay. Now what I need to do is just create a basic map and everything. Okay, for the calling part. So I have if let's just create a map. R-O-R-T-R-E map, comma vector int. Call it MP or auto E, that will go in our edges. I will do in my MP, I will pick the E0 and push back E1 for it, and I will do the same again for E1. Okay, MP0 और ये हम लोग का हो गया, E1 में E0 चला गया, E0 के बाद में E1 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी डीएफएस। उससे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं बूल का, फॉर आर विजिटेड, ग्रेट। अब स्टेट कितने साइज़ का बनेगा, देखो n, हमारे पास n नोड्स हैं तो n साइज़ का बना देते हैं, और सबको इनिशियलाइज करा देंगे हम फॉल्स से इनिशियली। ओके, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, बस हमें एक डीएफएस करनी है कि अगर हमारी डीएफएस ट्रू रिटर्न कर देगी तो ठीक है, अगर फॉल्स रिटर्न कर देगी तो फॉल्स, सही। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोर्स से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, डेस्टिनेशन तक जाएंगे, और एमपी सेंड करेंगे हमारा, और क्या सेंड करेंगे, विजिटेड, और यही सेंड कर रहे थे हम लोग, राइट, ये सेंड कर रहे थे। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस। इफ देयर इज नो कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर, देन इट शुड वर्क, और देयर इज कंपाइलेशन एरर, आई थिंक आई मेड द स्पेलिंग एरर विद डेस्टिनेशन, राइट, यहाँ पे भी गलत है मेरे हिसाब से। ओके, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ओके, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ओके, ग्रेट, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड नाउ। अगेन अ कंपाइलेशन एरर वेस्टेड। ओके, मैंने इसे नोड बोल दिया, जबकि मैं यहाँ पे क्या पार्स कर रहा हूँ, सोर्स। ओके, ग्रेट, सोर्स ही सोर्स, राइट। लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। अगेन a compilation error,
X comma destination. Oh, there's no comma. Destination. Lots and lots of error. Yes, something. I get a runtime error. Okay, what is the runtime error? Overflow. Right. What is the overflow? What is the overflow? सोर्स में ही तो जा रहा हूँ, दिक्कत क्या है? For X, I will just go random MP source. Okay, what is the issue right here? MP source में जो जा रहा हूँ, ordered map vector int MP. That is good. All is good. Then what is the issue? What is the issue? Just try to run this now. Okay, I'm still getting the same error. Why I'm getting a overflow? Why I'm getting a overflow error? Stack overflow, auto vector int. What is this? Uh, this runtime error. Why I'm getting a runtime stack for auto x MP source? I just need to go to MP source, right? I'm just listing the MP source, and for every source, I'm just storing a vector. What is the issue? Okay, let's just go and ask GPT what is the issue for this runtime error. Why runtime error? I'm not making the node as visited in DFS. Okay, I'm not making the node as visited in the DFS. Okay, great, right? So what I'm doing is I'm missing the most crucial part. Visited source true. If visited source is already true, then return false. If source has reached destination, then return true. Else visited source is true and then move forward. Okay, let's try to run this. Let's try to run this. Okay, it's taking quite a lot. Okay, so it has worked. Okay, so it has submitted. Now, this was our basic TFS solve that I did. Now, what I will do is solve the same problem with BFS so that we can get a better understanding of how to solve this particular problem. Okay, we have same structure, we have 0, we have 1, we have 2. Okay, 0, 1, and 2. Great. Now, what I need to do is check whether I can visit node 2 from by starting a BFS from node 0. Okay. So level 1, this is my level 1. This is my 0 node. This is my level 1. I would say this is my level 1. So for my BFS, I will start with level 1. As soon as I am standing at level 1, I will push my level 1 there. After I visited level 1, I will push it in my visited array also. So as soon as I pop this out of my level 1, I will push this in my visited, or I can say I have pushed it together at the same time. As soon as I visit it, I will mark it as visited and push it in my queue. Great. Now from this level, I need to go to the plus 1 level. That is my second level, and my second level is this level, and it includes both node 1 and 2. So the children node of 1 and 0 are 1 and 2. So what I will do is push 1 and 2 in my queue, as well as I will mark them visited.
नाउ आई एम पुशिंग देम टुगेदर। ऐसा लगता है कि मैंने एक साथ पुश कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। मैं इन्हें इससे जिस नोड में जा सकता हूँ i+1 पे, मैं उससे उसे ट्रैवर्स करूँगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक साथ पुश करते हुए दिखाता हूँ। तो मैं इस लेवल को, पूरे इस लेवल को पुश कर रहा हूँ अपने क्यू में। मैंने नोड अपने क्यू में से पुश करा दिया, अपने वेस्टेड में मैंने वेस्टेड मार्क कर दिया। अब मैं नोड 1 से क्या कर सकता हूँ, मैं +1 करके इस लेवल पर वापस जा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी वेस्टेड मार्क कर रखा है, तो मैं नहीं जाऊँगा और नोड 1 पॉप आउट हो जाएगा। नाउ आई एम स्टैंडिंग एट नोड 2। फ्रॉम नोड 2 मैं कहाँ जा सकता हूँ, नोड 0 और 1 में। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले ही चेक लगा दूंगा कि इफ़ माई क्यू टॉप जो है वो अगर मेरे जो डेस्टिनेशन नोड है उसकी वैल्यू के इक्वल है, तो रिटर्न ट्रू कर जाओ। जस्ट स्टॉप द कोड एंड जस्ट रिटर्न ट्रू देयर। ओके, यानी कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट स्टॉप द कोड देयर एज सुन एज आई एनकाउंटर अ डेस्टिनेशन नोड। ओके, तो अब इसका कोड भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, हम लोग सिमिलर कोड लिखेंगे। बस चेंज ये हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ BFS हम यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ DFS हम यूज़ करेंगे BFS। इस कोड को कमेंट कर देते हैं और यहीं पे BFS का कोड लिख लेते हैं, bool BFS। okay, bool BFS, and we will start from where, and we have again int source, and what we have apart from source, we have destination. What have destination, just let me copy destination here, destination. Now apart from this, what I have, my map. Sometimes I get confused with the spelling of map, that's why I take time to type map. Vector int mp, and apart from that, what I need is vector bool that this is visited. Okay, great. Now for this I will use a queue. I will use a queue. Okay, so I will use a queue. Now from a queue, what I need to do is store the node. Okay, so I will use queue in. Okay, so this is a queue. This is queue in queue. Sorry for the little lag. I'm just stretching my back. It's already past 12. What I will do now is I will start my BFS. So first thing first, I will push what, my queue source node in my queue. So queue dot push the source in the queue. Okay, great. Now source is in the queue. Now this source is also need to be marked as visited. Okay, so mark the source as visited, right? Last time we missed this particular part, but this time we won't. So we have visited. Okay, while not queue dot empty simple BFS, while my queue is not empty. Great. What I need to do is int n is equal to queue dot size. I have get the size of my queue, and what I need to do is while n minus minus to do a level order traversal. Now for a level order traversal, I have this. What I need to do next is okay. I don't think that we need this while n and q particular size. Why? Because we just need to check whether I can visit this particular node or not. I don't need to maintain a structure of a level by level traversal, right? It is good to maintain a structure, but in this kind of problem, we just need to check whether or not we can visit the particular node. So we can just get it from the queue front. Now, if node is equal to destination destination, then just do one thing, that is return true. Do nothing, return true. Else for do one thing, that is q dot pop, and do one thing next, that is for auto x, that will be mp of my current node that I have popped off the front of my queue. Okay,
Now do what? Do nothing, just uh, check first thing. If not visited my node, then only q dot push. Okay, this is not node, this is x. So q dot push x and mark this as visited also. Visited, this x is equal to true. This is my simple BFS code, and I have not done anything special here. Do one thing, just return false. Okay. Now instead of BFS, DFS, just call the BFS here. We have source destination map listed. We have source destination map listed just the last time. I have a queue. I have the top of the queue. I just pop it out. I'll check whether it's a true or false condition. Good. Now from that true and false condition, if that particular condition turns out to be false, then what I will do is visit the next level of the nodes. I will visit the next level of the nodes. If the node is not visited, then I will push it in my queue as well as mark it as true. Okay. And after the whole BFS travel, if I was not able to mark that particular node as visited or not was able to visit that node, just return false. Okay, great. Now is there anything left in this particular traversal? I don't think so. Let's just see whether this code works or not, or there we encounter any issue. No, I don't think we'll encounter any issue in this particular code. It was a pretty easy problem. I solved this particular problem from both this particular, this is my DFS solution, this is my BFS solution. We were able to do this. Okay, so this is problem number one that is being done. Now let's see what is the next problem that we should solve. Okay, now what is the next problem that we should solve? Find the path exists in a graph. We have already solved this. We should only solve the problem that are related to our topic, right? Okay, what is this problem? This is course schedule. Now I personally like to solve problems in this particular manner only. So let's see what is this problem all about. There are total of num courses you have to take, labeled from 0 to num minus 1. You are given an array prerequisite where prerequisite I is equal to AI and BI indicates that you must take course BI if you want to take course AI. Okay. So now this problem, you can't just directly see that this is a graph problem. Need to say if you are experienced, you have solved quite a lot of number problem, then you can just guess it that this is a graph problem in a single look. But someone who has just started DSA or who has just started working on DSA or is not, has never solved a graph problem, for him to see this as a graph problem, here the relation comes. There are total number of num courses you have to take, labeled from 0 to num minus 1 courses. You are given an array prerequisite where prerequisite I is equal to AI comma BI. Indicate that you must take course BI first. Okay, you must take course you must take course BI before taking course AI, right? You must take course BI before taking course AI. So this looks like this. Before I have to take course BI to reach course AI. So अगर मुझे course AI पे पहुंचना है, if I want to reach to at course AI, then there's only one way, that has to start from BI. Now let's see what is must take course BI if you want to take course AI. For example, the pair 0 comma 1 indicates that to take course 0 you have to first take course 1. Okay, so take course 0, 0 comma 1, 0 comma 1, you have to take course 0 comma 1, you have to take 0 before taking course 1. Okay, great. Now in my first example, whether or not can I visit all the courses or not, let's see. There are two courses, the number of courses are 2 and the prerequisite are 1 comma 0. Okay, so the prerequisite are 1 comma 0. So if I need to visit course 1, there is only one way. So before
to do that, I have to visit the course 0, then only I can go to course 1. Okay. Now I have a second case. The second case is they are same number of courses, but the prerequisite are changed. We have 1 comma 0 as a prerequisite, and we have also another prerequisite that says we have 0 comma 1. Now what I have is to take course 1, I have to take course 0. Okay, great. And to take course 0, I have to take course 1. What this forms is a cycle, because if I have to take course 0, then I have to take course 1, and I have to take 1, I have to take 0, right? So what is it's forming? It's forming a cycle. As you can see, this forming a cycle. Okay. Now there are total two courses. There are total of two courses to take. To take course 1, you should have to finish the course 0, and to take course 0, you should also have finished course 1. So it is impossible, because if I want to take course 0, I have to do course 1 before that, and if I have to do course 1, then I have to do course 0 before that. So it is forming a cycle, and if there is a cycle, then we can't visit all the particular about all the courses. Okay, so we can't reach all the courses if there is a cycle in a graph. Okay, now the question arises, how do we find a cycle in a graph, especially in a directed graph? Okay, that is pretty interesting, because let's just discuss this particular part. uh, how we find a cycle in a directed graph and an undirected graph, and how both are different. Okay, so let's just create this graph. This is 0, this is node 1. Okay, this is node 2, and what I have is node 3 here, and a node 3 connection is here. Okay, this is a undirected graph. Great. I have a stack. I push node 0 in my stack. I push node 1 in my stack. I push node 2 in my stack. I'm using a DFS to just solve it. Okay, so if you don't understand that, this is a basic DFS that I'm using. Okay, so far I visited node 2. Then I go to node 3. I push it in my stack. From node 3, where I can reach? Node 0 again. So I've already marked node 0 as visited in my visited array. If you know, if you have seen my the last 30-minute, 40-minute, whatever the length of the video is, if you have seen that previous part, then you know that I have already visited the node 0, and I have already marked node 0 as visited in my array as basic DFS that I do. So node 0 was already visited, so when I go from node 3 to node 0 again, so node 0 was already visited, so there it is a cycle. Okay, then it should be a cycle. Okay, great. Now let's see a case where this particular thing will fail. I have node 0, I have node 1, I have node 2. Okay, uh, let's just take this node 0, this node 1, and there's this node 2. From node 0, I again have a stack and I have a visited. Okay, great. From node 0, where I can go? I can go to node 1. So firstly, I will mark node 0 as visited and push it in my stack. And what I will do is, next I will push node 1 in my stack, and I will mark node 0, node 1 as visited. Now from node 1, where I can go is node 2, right? I reach node 2, I mark node 2 as visited. From now node 2, I can go to node 1 again. Now this is not a cycle. I mean, there's a bidirectional edge, but it does not mean that there is a cycle in this graph. There is no cycle in this graph, right? There is no cycle in this particular graph. But if we go by my logic of that visited, then this is a cycle in my graph, but it should return false. But what will happen is that as soon as I go from node 2 to node 1 again, and because the node was already visited, we will mark that as true, and it will be counted as a cycle. But what it should have been counted? It should have been counted as a false. Okay, so here our issue arises in our unit non-directed graph. In directed graph, there will be another issue that I will discuss. So firstly, let's discuss about the non-directed graph. So here the issue arises. So what I can do is that I can pass one more thing in this particular case. So when I have to detect cycle in a non-directed graph or undirected graph, what I do is I pass a parent also. So node 0, node 1, node 2,
When I am visiting node 0, my parent is -1 because this is a starting node. When I go to node 1, I will pass node 0 as its parent. So from node 1, when there is again a DFS and it goes to node 0, okay, this is my, so my 0 was already visited. From node 1, I already started again a DFS, and the DFS goes to node 0 and it asks, are you visited? It says, I am visited. But are you the parent of the node 1? If you are the parent of the node 1, then you are not a cycle. So here it is वैलिड केस नाउ इट वोंट रिटर्न ट्रू. सो हम लोग का जो फॉल्स ट्रू आ रहा था ना, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि अब जैसे नोड 2 पे हम गए, हमने नोड 1 को उसका पैरेंट सेंड कर दिया. अब नोड 2 जब दोबारा डीएफएस के लिए नोड 1 पे जाएगा और देखेगा कि नोड 1 तो पहले से विजिटेड है, तो एक कंडीशन और चेक हो जाएगी कि क्या तुम उसके पैरेंट तो नहीं है नोड 1. अगर नोड 1 नोड 2 का पैरेंट है, तो वो साइकिल नहीं बना रहा, वो तो अपने पैरेंट से आ रहा है, इस वजह से उसे विजिटेड दिख रहा है. तो एक सिंपल सी कंडीशन हम और लिख सकते हैं, पैरेंट पास करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज आर बेसिक डीएफएस टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ ग्राफ. अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसका यानी कोई ऐसा हम लोग के पास वो नहीं है, लीड कोड पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर लीड कोड पे इसकी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं डेफिनेटली उसे दिखाता. अह, मेरा गला सूख गया है, जस्ट अ सेकेंड. So this is a long video, as I said. Now what I can do is you can just write a basic code for this. जैसे आप लोग को ये याद हो जाए कि कैसे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे डिटेक्ट करी जाती है. एक कोड लिख देते हैं, उसका छोटा सा कोड लिखते हैं, छोटा सा रहेगा, जस्ट फॉर मेमोरी, आप लोग की मेमोरी के लिए. साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ डिटेक्ट अ साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट. तो हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे साइकिल लिख देते हैं. हम लोग को पूरा अपना बी एफ एस डी एफ एस कवर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट और हाउ विल यूज ईच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, तो इसी पे बात कर रहे हैं. तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दैट थिंग. ओके, तो एक बी एफ एस नहीं डी एफ एस लिखनी है मुझे. एक बूल डी एफ एस लिखते हैं जो चेक करेगी कि नोड विजिटेड है कि नहीं. तो हम लोग नोड पास करेंगे, उसका क्या पास करेंगे, पैरेंट पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे, विजिटेड पास कर देंगे. ग्रेट. और हम लोग एमपी तो पास करते ही हम लोग का. ओके ग्रेट. नाउ व्हाट विल हैपन इज इफ इफ नहीं लिख के हम लोग विजिटेड यहीं लिख देते हैं. विजिटेड में हम लोग अपने नोड को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे. विजिटेड हम लोग अपने नोड को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे. ओके, आफ्टर विजिटिंग हम लोग अपने नोड को ट्रू कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो एक्स जो चलेगा एमपी के हमारे नोड पे. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे. इफ विजिटेड जो है हम लोग का विजिटेड है और नोड है हम लोग का चेक कर देते हैं, पहले पेरेंट ही चेक कर देते हैं. इफ पेरेंट इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करें भाई, कुछ ना करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि कुछ नहीं होगा. रिटर्न फॉल्स करें भी क्यों, कंटिन्यू करते ना. यानी ये नोड नहीं हुआ तो इसके आगे के नोड तो होंगे ही, यानी इसके आगे कोई नोड एग्जिस्ट कर सकता है ना जो आंसर हो हमारा. तो अगर हम यहीं से रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा. सो इफ पेरेंट इज इक्वल टू एक्स देन कंटिन्यू. एल्स हमारे पास क्या केस होगा, इफ विजिटेड हम लोग का एक्स अगर अभी भी विजिटेड है, पेरेंट नहीं है और विजिटेड है, तो क्या करो, तो तुरंत रिटर्न कर जाओ कि हमें अब एक क्या मिल गई, साइकिल मिल गई, वैलिड साइकिल मिल गई है. रिटर्न ट्रू हियर. एंड एल्स हमारे पास क्या केस होगा, एल्स तो हमें एक ही चीज़ बचती, वो हमारी डी एफ एस. वो इफ़ हमारी एक कंडीशन लिख देंगे, इफ़ डी एफ एस हमारी ट्रू आ जाएगी तो हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे. मैं पूरी डी एफ एस नहीं लिख रहा हूँ. इफ़ डी एफ एस यहाँ पर ट्रू आ जाते तो रिटर्न ट्रू. एक और केस हो जाएगा रिटर्न ट्रू का. और वरना फिर अगर ये कंप्लीट स्टैक एग्जॉस्ट हो गया उसके बाद भी हमें नहीं मिली तो रिटर्न फॉल्स. सो इट्स अ बेसिक डीएफएस, नथिंग स्पेशल. बस हमने एक स्पेशल पार्ट ऐड कर दिया जरा सा, वो है पैरेंट चेक करने का. इफ पैरेंट इज इक्वल टू एक्स, और यानी हम लोग जो अपने पैरेंट को विजिट तो नहीं कर रहे हैं दोबारा, बस एक सिंपल सा चेक. ओके ग्रेट. नाउ वी हैव कंप्लीटेड
डिटेक्टिंग अ साइकिल विद DFS इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसी साइकिल को एक डायरेक्टेड ग्राफ में डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, इसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना अलग है क्या हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ से। तो देखते हैं, ज़ीरो, वी हैव नोड वन एंड वी हैव नोड टू, राइट। अब डायरेक्शन, चलिए, बेसिक हमारा कॉल स्टैक बना लिया मैंने और ये मेरा विजिटेड एरे बन गया। मैंने नोड ज़ीरो को विजिट किया, नोड ज़ीरो को स्टैक पे पुश किया, नोड ज़ीरो को विजिटेड मार्क किया, ग्रेट। नाउ आई विजिट नोड वन, आई विजिट नोड वन, आई push it in my stack, I mark it as visited, great. Now what happens is I can't go any further. Okay, क्या ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा? तो अभी तक हम लोग जनरली क्या कर रहे थे, एक सिंगल नोड से ही DFS मार रहे थे, क्योंकि नोड से डेस्टिनेशन रीच आउट करना होता था। अब हमारा ऐसा केस नहीं है, अब हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है। तो हो सकता है कि ये जो इतना विजिट करा है यहाँ पे स्टॉप हो गया हो, लेकिन समवेयर हियर एग्जिस्ट अ साइकिल, यानी जैसे यहाँ पे हो सकता है नोड टू से नोड थ्री एक कनेक्शन हो, फिर नोड थ्री से एक फोर हो, और फिर नोड फोर से नोड टू हम दोबारा रीच कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये एक साइकिल एग्जिस्ट कर गई, तो हमें यहाँ से DFS मारनी है। अगर हम सिर्फ नोड जीरो से DFS करके छोड़ देंगे तो केस फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग को जैसे यहाँ पे DFS स्टॉप हुई, तो हम क्या एक फॉर लूप लिख लेते हैं, वी वर्क ऑन अ फॉर लूप एंड इफ आर नोड इज अनविजिटेड सो फार, यानी उसे अब तक विजिट ही नहीं हुआ आज तक, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक DFS स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, नोड टू से DFS स्टार्ट होगी। अभी के लिए हम ये जो हम लोग के नोड थ्री और फोर है ना, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब नोड टू से DFS स्टार्ट हुई, हमारे विजिटेड में क्या है, हमारे विजिटेड में नोड वन और नोड जीरो डले हुए हैं। उन्होंने कहा हम तो विजिट हो चुके हैं। अब नोड टू से क्या हुए, नोड वन भाई साहब क्या हो गए, विजिट होने गए। नोड वन भाई साहब क्या थे, पहले से विजिटेड थे। इन्होंने विजिट जैसे ही होने गए तो नोड टू से विजिट हुए। इन्होंने ऐसा कहा आई एम ऑलरेडी विजिटेड। तो इसने कहा कि सिंस यू आर ऑलरेडी विजिटेड, तो ऐसा करते हैं तुम्हें मार्क कर देते हैं कि साइकिल मिल गई। अच्छा, इसमें पेरेंट और चाइल्ड वाला कन्फ्यूजन जो था हम लोग का, वो उतना नहीं है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। सो दैट इशू डज नॉट एग्जिस्ट हियर दैट मच। एग्जिस्ट कर सकता है, अभी भी इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन करता नहीं जनरली। ओके, तो अब क्या हुआ कि इसमें तो भाई हम फंस गए। अब क्या करें कि ये जो है, ये तो बिना किसी वजह के विजिटेड हो रहा है, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं कि मैंने क्या कहा कि ये एक अलग फॉर लूप का पार्ट होंगे और ये एक अलग फॉर लूप का पार्ट होंगे। फॉर लूप के अलग अलग पार्ट से मेरा कोई ये मतलब नहीं कि अलग अलग। ये देखिए, पहली बार में वेस्टेड हो गया, मैंने एक वेस्टेड के लिए चलाया। आई विल स्टार्ट फ्रॉम सब नोड ना, मैं नोड टू से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन नोड टू से अगर मैंने स्टार्ट किया होता तो मैं नोड वन तक विजिट कर पाता। नोड वन के अगर आगे फर्दर मूव आउट नहीं कर पाता, तो नोड जीरो मेरा अनविजिटेड रहता। तो उससे जो नॉन विजिटेड नोड हैं, जो विजिट नहीं हुए अब तक, उनसे मुझे DFS करनी ही पड़ेगी ताकि मैं उनको विजिट कर पाऊँ। शायद उनके पास कोई साइकिल हो जिसे मैं मिस आउट कर जाऊँ, तो फिर मैं नोड जीरो से करता। तो ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो लेकिन ये अलग अलग फॉर लूप का पार्ट होंगे, ये एक अलग फॉर लूप का पार्ट है और ये एक अलग फॉर लूप का पार्ट है, राइट। तो ये एक अलग कॉल स्टैक बनाएगा और ये एक अलग कॉल स्टैक बनाएगा, समझे। ये इसकी कॉल स्टैक अलग है, इसकी कॉल स्टैक अलग है। बस इनके जो विजिटेड है ना, वो कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके बीच का ये जो नोड वन है, ये जो विजिटेड है, ये दोनों नोड के बीच के सेंटर में आ रहा है, तो ये कोलाइड कर जा रहा है। तो अगर किसी तरीके से मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि ये एक अलग कॉल स्टैक का पार्ट था जब ये विजिट हुआ था, और ये एक अलग कॉल स्टैक का पार्ट था जब ये विजिट हुआ था, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, मेरा काम तब बन जाएगा। अच्छा, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक और हम चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक और हम लोग वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो ये मार्क करेगा कि ये कौन से कॉल स्टैक का पार्ट था। ओके, तो जरा सा ये डायग्राम काफ़ी ख़राब हो गया है, तो नाउ लेट्स मेक अनदर डायग्राम अगेन। लेकिन अब हमारे पास नोड ज़ीरो है, नोड वन है, और फिर मेरे पास नोड टू है, और मेरे पास दो एरे हैं, एक मेरा विजिटेड के लिए, एक मेरा विच कॉल स्टैक पार्ट इज दिस।
विच कॉल स्टैक पार्ट इज दिस। ओके ठीक है। अब चलिए जैसे एक इंडेक्सिंग ले लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमने उन्हें नोट ज़ीरो से स्टार्ट करा। ओके, नोट ज़ीरो से जैसे मैंने स्टार्ट करा, नोट ज़ीरो मेरा विजिटेड हुआ। लेकिन नोट ज़ीरो को विजिट करने के साथ साथ मैंने क्या करा ना, मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ। इंडेक्स मैंने बना ली ज़ीरो से, ठीक है। इंडेक्स मैंने बना ली कहाँ से, अभी ज़ीरो से। और ज़ीरो से जो है ये नोट ज़ीरो जो है मेरा, ये यहाँ पे क्या विजिट कर देगा, यानी नोट ज़ीरो पे जो है जो मेरा, यहाँ पे मैं ज़ीरो डाल दूंगा कि ये मेरे पहले कॉल स्टैक की कॉल में आया था, ठीक। नोड वन पे मैं आया, मैंने नोड वन को विजिट करा। नोड वन भी मेरा किसका पार्ट है, मेरी पहली कॉल स्टैक का पार्ट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ माय फर्स्ट कॉल स्टैक, नॉट एनी अदर कॉल स्टैक, सो आई एम मार्क्ड एज जीरो कॉल स्टैक। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे कुछ होगा नहीं फर्दर, सो इट जस्ट स्टॉप्स एंड रिवर्ट बैक। अब उसके बाद अब सेकंड कॉल स्टैक चालू होगा नोड टू से। अब बिफोर स्टार्टिंग माय सेकंड कॉल स्टैक, मैं अपने आई को आई प्लस वन करके I is equal to 1 कर दूंगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, एज सून एज आई विजिट नोड टू, आई विल विजिट नोड टू, बट इन माई कॉल स्टैक वेक्टर नोड टू हैव वैल्यू वन। ओके, नोड टू के पास अब कौन सी वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है वन, कि ये जो है ये फर्स्ट कॉल स्टैक का पार्ट है, ना कि जीरो कॉल स्टैक का पार्ट है। अब मैं जब वन को दोबारा विजिट करने जाऊंगा, नोड टू से मैंने वन को विजिट करा, विजिटेड में तो वन ट्रू है, लेकिन क्या कॉल स्टैक में नोड जो वैल्यू हैं, जो यानी नोड टू से मैं जा रहा हूँ नोड वन पे, क्या कॉल स्टैक की वैल्यू सेम है, तो नहीं, कॉल स्टैक की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्न आउट टू या फॉल्स केस, यानी यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉल स्टैक का पार्ट है और ये एक डिफरेंट कॉल स्टैक का पार्ट है, और ये एक वेक्टर में स्टोर था। तो हमने बस चेक करा लिया वेक्टर में, कि जब हम चेक करते हैं ना कि इफ विजिटेड इज ट्रू, तो हम इफ विजिटेड इज ट्रू के साथ साथ एक कंडीशन और चेक कर लेंगे, क्या जो कॉल स्टैक अभी चल रही है, क्या जो इस नोड को हम विजिटेड मार्क कर चुके हैं, यानी जिसे हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि ये तो विजिटेड है, कहीं ये साइकिल तो नहीं बना रहा, उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि सेम कॉल स्टैक से बिलोंग करता है कि नहीं। अगर सेम कॉल स्टैक से बिलोंग करता है और विजिटेड भी है तो रिटर्न ट्रू, और अगर डिफरेंट कॉल स्टैक से बिलोंग करता है तो रिटर्न फॉल्स, समझे। सो इट्स अ बेसिक कोड। अब ये तो मैंने खैर कॉल स्टैक बना दिया था। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कॉल स्टैक ऐसा कुछ खास नहीं बनाते, हम लोग एक बेसिक वो बना लेते हैं एरे, और जैसे जैसे जिस नोड को विजिट करते जाएंगे ना, उसको हम एक लिख लेते हैं इन रिकर्जन करके। ओके, इन रिकर्जन का कुछ काम नहीं होता है, जैसे नोड जीरो विजिट हुआ तो नोड जीरो को विजिटेड मार्क कर दिया, उसके बाद नोड वन विजिट हुआ, नोड वन को मार्क कर दिया। अब नोड वन के बाद फर्दर हम कहीं नहीं जा सकते थे, राइट, नोड वन के बाद हम फर्दर कहीं नहीं जा सकते थे। तो जैसे हमारा स्टैक होता था ना, कि नोड जीरो विजिट हुआ, फिर नोड वन विजिट हुआ, नोड वन के बाद हम कहीं नहीं जा सकते, तो इस कॉल स्टैक में इसका पार्ट खत्म हो चुका, तो इस कॉल स्टैक में इसका पार्ट खत्म हो चुका है, तो हम अपने रिकर्जन से भी, यानी जो एरे में स्टोर कराया इसे पॉप आउट कर देंगे, फिर ऐसे ही नोड जीरो को हम पॉप आउट कर देंगे, तो ये अब हमारे इन रिकर्जन वाला एरे दोबारा खाली हो गया। यानी जैसे जैसे जो हम लोग का कॉल स्टैक दिखाना था ना हम लोग को, तो जब सेकंड कॉल स्टैक जाएगा ना, नोड टू से जब दोबारा रिकर्जन स्टार्ट होगा, तो उसको एक एम्प्टी कॉल स्टैक मिलेगा, लेकिन जो विजिटेड एरे है वो भरा हुआ होगा। तो विजिटेड एरे में तो जीरो और वन डले हुए हैं, लेकिन जो हमारा कॉल स्टैक वाला एरे था इन रिकर्जन वाला, वो एम्प्टी है। तो अब जब नोड टू आएगा तो नोड टू यहाँ गया और नोड टू विजिटेड भी हुआ। उसके बाद नोड टू से हम जब दोबारा नोड वन के लिए गए, तो हमने अपने नोड वन को हम ढूंढेंगे अपने इन रिकर्जन में, तो अरे इन रिकर्जन में तो है ही नहीं, अब इन रिकर्जन में नहीं है, तो यानी इसका कोई पार्ट है ही नहीं, समझे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, कि इफ विजिटेड चेक करेंगे कि हाँ नोड वन तो पहले से विजिटेड है, क्या ये मेरे रिकर्जन में भी है, अरे ये तो मेरे रिकर्जन में है नहीं, तो यानी ये मेरा इस रिकर्जन का पार्ट ही नहीं है, और मैं एक गलत साइकिल डिटेक्ट कर सकता था, जिसे अब मैं नहीं डिटेक्ट करूँगा। खैर काफ़ी लंबा ये एक्सप्लेनेशन बन गया, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में हम लोग चले गए, लेकिन खैर अच्छा एक्सप्लेनेशन था आई गेस, काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा मैंने इसे। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी कोर्स, जो हमने कोड लिखा है, इसी से हम करते हैं कोर्स शेड्यूल वाली प्रॉब्लम को। अगर हम इसी से कोर्स शेड्यूल वाली प्रॉब्लम करें, और साइकिल डिटेक्ट करने के लिए जो कोड मैंने अभी लिखा है, वही कोड हम लिख के चेक करें कि हम लोग क्या साइकिल डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट।
लेकिन अब मैं थक गया दो प्रॉब्लम में ही। ठीक, टायर्ड बाय नाउ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जैसा मैंने बताया, मैं बस एक सिमिलर वो लिख दूंगा हम लोग की टीएफएस। हम लोग साइकिल बीएफएस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले हम लोग इसी से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उससे चेक कर लेंगे। बूल डीएफएस। नाउ मैं क्या पास करूँगा, हम लोग का सोर्स नोड से स्टार्ट करूँगा, तो एंड नोड कोई भी हो सकता है। ओके ग्रेट। और हम लोग एक मैप भी पास करेंगे, राइट, an ordered map, an ordered map that will hold int vector mp। अच्छा, एक वेक्टर आ गया मेरा, वेक्टर बूल, इसको विजिटेड कह देते हैं, राइट, visited, great। Now apart from visited, I need another vector, right? I need another vector that is in recursion. At this particular time, so tired, I can't even describe this। खैर, क्या कर सकते हैं। Okay, I have visited, I have also what is called in recursion। Okay, so vector bool, हाँ, सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं कोड टाइप कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे अमेज़ॉन का मेल आया है। अमेज़ॉन क्या कर रहा है, हर चौथे दिन एक, हर 2 हफ्ते बाद एक मेल भेज देता है सर्वे के नाम पे कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, सर्वे करो, तो सर्वे भर दो। अब तक मैं पचासों बार ये सर्वे भर चुका हूँ, एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैं ये कोड जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ, मैं अपना सर्वे फिर से भर रहा हूँ, एंड दैट इज़ सो अनोइंग, क्योंकि मुझे बार बार वो सर्वे भरना पड़ता है और उसके बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और आज इन्होंने जो सर्वे भेजा है ना, इसमें इन्होंने क्या करा है इन्होंने कि जो जो सर्वे भेजा है ना इन्होंने, उसमें इन्होंने इंटरनल कंपनी की जो हायरिंग है वो भेजी है। तो इंटरनल कंपनी की हायरिंग भाई मैं कैसे भर सकता हूँ। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई थिंक अमेज़ॉन इज टॉइंग विद माई इमोशंस, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि अमेज़ॉन को क्या मज़े मिल रहे हैं मेरे साथ इस तरीके का घटिया मजाक करके। आप ओके, जस्ट रीसेट दिस कोड, जस्ट इसके चक्कर में पता नहीं क्या टाइप कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं एक बार ये ज़रा सा सर्वे फिल आउट कर दूँ, सर्वे फॉर्म, उसके बाद टाइप करता हूँ कोड। Okay, now let's type this. Okay, bool DFS. What I am passing is a node. Will also pass an ordered map, or dered, called it map, and just int comma vector int, call it mp vector bool visited vector
बूल, इसका नाम क्या रखें, छोटा सा नाम रख देते हैं। अ, अब वो INR, right? INR would be great. Now what I need to do is as soon as I come down to a node, मैं उसे विजिट करूँगा और उसे मार्क कर दूंगा कि भाई ये नोड क्या है, विजिट हो गया, ट्रू। Now what I will do, as soon as I visit this node, what I will do is another thing, that is an INR में इस नोड को मैं फिर से ट्रू मार्क कर दूंगा कि ये जो है इस रिकर्जन साइकिल का पार्ट है। ओके ग्रेट। नाउ व्हाट विल हैपन इज I will go to other nodes, that is for auto X, that will go in the MP of my particular node. And what will happen is I will check if, okay, if visited node is false, अगर जो मैंने नोड विजिट नहीं कर रखा है तो भाई DFS कॉल करना बनता है ना। just call the DFS from this node X comma MP comma visited comma INR, ओके सर, कॉमा इसमें विजिटेड कॉमा INR। इफ ऐसा हुआ कि ये नोड तो नहीं विजिट हुआ था अभी तक, लेकिन जो विजिट के लिए मैंने चेक करने के लिए जब DFS कॉल करी तब वो नोड में विजिट करा और साइकिल मिल गई, तो रिटर्न ट्रू। एल्स क्या रिटर्न करो, एल्स एक चीज चेक करो, वो क्या है कि इफ इन रिकर्जन, यानी इन रिकर्जन भी ट्रू होना चाहिए, यानी रिकर्जन INR जो है मेरा मेरा जो X है ना वो INR में भी ट्रू हो, तो क्या करो, रिटर्न ट्रू कर जाओ कि अब भाई देखो साइकिल मिल गई है। वरना क्या होगा, वरना INR जो है वो क्या होगा हमारे नोड के लिए, जो हमारा नोड था, देखो यहाँ पे X नहीं पॉप आउट हो रहा है, नोड पॉप आउट हो रहा है। किसकी साइकिल खत्म हुई, नोड का कॉल स्टैक खत्म हुआ, तो नोड को क्या करा, INR नोड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी पॉप आउट कर दिया। फॉल्स यानी पॉप आउट नहीं हुआ, यानी मार्क कर दिया कि ये भी रिकर्जन का पार्ट नहीं है। अब जब दूसरा रिकर्जन आएगा वो इसे अपना पार्ट बनाएगा, ये इस रिकर्जन का पार्ट नहीं है, ठीक। और रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि भाई साइकिल तो मिली नहीं, साइकिल चेक करना मेन टास्क है ना। तो ये नो साइकिल फाउंड, और यहाँ पे क्या किया, रिमूव फ्रॉम द रिकर्जन कॉल स्टैक। ओके, now what I need to do is nothing big of a thing. I need to just create a unordered map. Okay, so what is the relation 0 to 1? Indicate that you must take course BI if you want to take course AI. तो कोर्स BI मुझे लेना ही पड़ेगा if I want to course AI. Okay, so ORTERED map int comma vector int, call it MP auto x uh, prerequisites, going the prerequisites. Okay, so now we have x0 and x1। मैं क्या करना चाहता हूँ, हम लोग का जो MP है ना उसमें मैं नोड 0 से नोड 1 जा सकता हूँ। ओके, तो मेरा जो x का जो 1 है ना उसके लिए पुश बैक कर दो x ब्रैकेट 0 को, ठीक। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अगर साइकिल मिल जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, हर नोड से स्टार्ट करेंगे। हर नोड से स्टार्ट करने के लिए भी तो हमें वो करना पड़ेगा, कितने एजेस हैं फॉर एंटायर नम कोर्सेज, तो 0 और 1 होगा, ऐसे ही 0 1 और तो हो नहीं सकते, जैसे 0 और 1 होगा। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, और इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, ठीक। तो 1 विजिट नहीं होगा, n क्या है, नम कोर्सेज, COURSES dot I plus plus, okay, should be I plus plus
नथिंग ग्रेट. इफ नॉट विजिटेड, ओके मुझे विजिटेड भी तो बनाना पड़ेगा. मैंने दो नहीं बनाया ना. तो bool visited. What is the number of courses? This is the number of courses. I just need to copy paste this particular part. Okay, da. Mark them false. Okay, great. Now do what thing? That is just copy this, paste it here. Just change it to INR. Okay, if not visited, what the current node, that is I, and if the DFS returns true, अगर DFS ट्रू आ जाती है तो रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू. यानी जो है कि भाई वेस्टेड नहीं है तो DFS चालू करो यहाँ से. DFS यहाँ से चालू करेंगे, नोड आई से चालू करेंगे. और क्या भेजते थे हम लोग? नोड आई मैप वेस्टेड और INR. नोड आई मैप विजिटेड और INR. ओके ग्रेट. अगर ऐसा हो जा रहा है कि तो रिटर्न फॉल्स. अगर यानी साइकिल मिल रही है तो फॉल्स. हम लोग सारे कोर्स नहीं विजिट करते. इफ देयर इज cycle, then we cannot visit all of the courses. और उसके बाद अगर एक भी साइकिल नहीं मिली पूरे ग्राफ में तो रिटर्न ट्रू. नाउ लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. वैसे चल तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. इट वर्क प्रीटी वेल ऑन दिस. ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके रॉन्ग आंसर आ गया. कहाँ रॉन्ग आंसर आ गया? फॉल्स. और यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू. वाई वाई वाई. केस 1 में सही चल रहा है, केस 2 में फॉल्स आ रहा है. ऐसा क्यों? एक्सपेक्टेड फॉल्स और रिटर्न ट्रू कर रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? मैप में x में 1 आ गया. और अच्छा क्या हो रहा है भाई? साइकिल तो उसे मिल जानी चाहिए थी, राइट? INR नोट को मैंने फॉल्स करा, मैंने रिटर्न फॉल्स करा, नो साइकिल मिली. नो साइकिल मिली तब रिटर्न ट्रू वरना फॉल्स. ओके लेट्स सी. विजिटेड में आए, हमने नोड को क्या मार्क करा? ट्रू मार्क कर दिया. ओके गुड. इन रिकर्जन में भी अपने नोड को हमने क्या मार्क कर दिया? ट्रू मार्क कर दिया. इस नोड से हम जहाँ जहाँ जा सकते थे. इफ विजिटेड नोड इज इक्वल टू फॉल्स. अगर नोड विजिटेड नहीं है और तो फॉल्स. DFS कॉल करी, रिटर्न ट्रू कर दिया अगर DFS हो गई. अगर ऐसा नहीं है तो INR x इज इक्वल टू ट्रू कर दिया. ओके रिटर्न ट्रू कर गए. क्योंकि अगर विजिटेड भी है और सेम रिकर्जन साइकिल का पार्ट भी है तो INR इज इक्वल टू ट्रू. ओके गुड. इफ नोड इज इक्वल टू फॉल्स, INR नोड में फॉल्स कर दिया मैंने. जो भाई विजिट हो चुका उसे INR नोड में फॉल्स भी तो करना पड़ेगा. यानी इस विजिटेड साइकिल का पार्ट नहीं है वो. ठीक है, दूसरे साइकिल का पार्ट है, उसे मार्क कर दिया. रिटर्न फॉल्स. ओके व्हाट हैपेंस इज और ऑटो एक्स प्रीरिक्विजिट if not visited and DFS में रखने गया. ठीक है, नॉट विजिट ऑल द कोर्सेज. NR कोर्सेज में हर जीरो से गया मैंने, नम कोर्सेज से कम. ओके नम कोर्सेज. ओके नम कोर्सेज 2 है. यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है. अगर मैं सारे नोड विजिट कर पा रहा हूँ तभी देन दे द वे. 0 से 1 गया और 1 से 0 जाऊँगा तो देयर द साइकिल एंड रिटर्न फॉल्स. तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मैं ड्राई रन करूँ, मैं नोड 1 और 0 है मेरे पास, तो 1 और 0 और 0 1 मैंने करा. ठीक है. फॉल्स फॉल्स MP x, कहीं ऐसा तो नहीं MP x0 और x1 का उल्टा पड़ रहा है? लेट्स जस्ट ट्राई दिस. These are some random checks that you need to do sometime. Still the error persists, so यानी कोई लॉजिक एरर है. I think there is some fallacy in the logic.
Okay, what is the fallacy in the logic? Let's just try to see this. You have num courses, I go from there. If not vested, I start a DFS. Okay, so initially node 0 was not vested. Okay, so initially node, okay, initially course was not vested. Okay, I will start from course 0. So initially course 0 was not vested. To visit course 0, I need to visit course 1, right? No, to visit course 0, I need to visit course 1, right? So from course 1, there would be an H to course 0. But what I am doing is I am making a H from course 0 to code 1. So that's not an issue. मैं course 0 से 1 जा सकता हूँ. Then only I will go ना. तो for instance, INR मैप में क्या है? मैंने चेक करा if statement node is equal to false in DFS INR. Then return true. Else return it false. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ if चेक करने की वजह से इशू आ रहा है. समटाइम इट हैपेंस कि else if लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, क्योंकि if सिर्फ मैं चेक कर दे रहा हूँ तो गड़बड़ हो रही है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि else if करना चाहिए था. ओके, द एरर प्रोसेस अभी भी प्रोसेस कर रही है. ग्रेट, यानी अभी भी एरर सही नहीं हुई. ड्राई रन करना पड़ेगा. ये चेक करते हैं ड्राई रन से ही. दिस इज क्वाइट लॉन्ग. ओके, इट्स 1:30 already, right? To find the why this error. I don't think there should be any error in this particular code. Bool BFS not visited, and I do a DFS and it turns out to be true. If it's already visited, then what is the point? There's no point, right? So why it is giving me this wrong solution issue? Don't know why. Okay. Okay, let's just see. Initially, I have node 0. From node 0, I can go to course 1. So I visit node 0 as visited, and course 1 has also visited. Great. This is my first particular thing that would happen. I will mark 0 as visited. Okay. And then I will do what? I will mark node 1 as visited. But from node 1 there is also nh2 node 0. So after 1 I have to visit node 0, and I go to node 0. Since they are both a part of same recursion, because there is an edge between node 1 and 0, तो क्या होगा कि नोड 1 नोड 0 पे जाएगा और चेक करेगा क्या नोड 0 विजिटेड है. और पाएगा कि हाँ नोड 0 विजिटेड है, और नोड 0 विजिटेड है. और क्या कहते हैं, क्या वो सेम रिकर्जन का पार्ट है? हाँ, वो सेम रिकर्जन का पार्ट है. दैट वुड बी ट्रू. सो इट वुड रिटर्न ट्रू. यहाँ से सीधे कोड एंड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा. और जैसे ही वो रिटर्न ट्रू करेगा, मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर जाऊँगा. एल्स यहाँ पे रिटर्न ट्रू होना चाहिए. सो व्हाट इज द इशू? लेट्स आरजीपीटी. ओके, व्हाट the issue? Let's see. Okay. Okay. So here is the thing. I'm checking node is true. I have to check node X is true. Okay. That is why you should never code add one. Okay. Uh, so there was no logical error. It was one spelling error, I would say. So the code works. Now it is pretty good code. Now I'm thinking, should I continue this or should I wrap it up for today?
That is the thing that I'm thinking. It is 1:30 already. We have solved two problems. If we go at code schedule 2, shall we solve this also? Say we can definitely solve it if we want to right now. You say why not just solve this? Just try to solve this. Mm, or should I try to solve something else? Minimum height trees. I think this was something that I was planning to solve in my tree problems. Valuation number provinces. Okay, this can be a good problem. Number of provinces. Right, it could be a good problem. There are n cities, some of them are connected while some are not. If a city is connected directly with city B and city B is connected directly with city C, the city A is connected indirectly to city city C. A province is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside of the group. You are given n into n matrix. Okay, so there's n into n matrix where is connected I comma j is equal to 1 if the ith city and the jth city are directly connected. Okay, great. And is connected I comma j is equal to 0 otherwise. Okay, great. तो हमारे पास जो हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ रही थी हर प्रॉब्लम में, सो फार वी वर क्रिएटिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बट फ्रॉम दिस in this problem we don't have to create that particular thing, right? Because we are having a matrix already. Now this matrix, okay, we have what, 0, 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3. 1, 2, 3. This is 1, 2, 3. Now a cell ij is 1 if there is edge between node 1. A cell ij is 1 if there is an edge between I and j, and it is 0 if there is no edge. So what is the first matrix will be with 1, 1, 0, 1, 1, 0. Okay, 1, 1, 0 and 0, 0, 1. 1, 1, 0 and 0, 0, 1. Okay, great. So there's an edge between 1 comma 1 because they are the same particular cell, or what we can say is these are the same nodes, so that is why there is an edge between them. But there is an edge between from 0, from 1 to 2 there is an edge, and from 3 to 3 there is only edge. So there is no edge between 1 and 3 and 2 and 3. There is an edge between 2 and 1. It's a bidirectional edge. It's a directed graph, or so it's an undirected graph, I guess, because there's no direction mentioned in the diagram. Also, there's no direction, so this is a undirected graph. It could have been a case that it was a directed graph, so that we need to check. So it is an undirected graph. तो अब सिंपल सा है कि भाई देखो, ये है और ये है। अब करना क्या है, यू आर गिवन एन टू एंटर मैट्रिक्स वेयर is connected I comma j is equal to 1 if the I city and the j city are directly connected, and is connected I comma j is 0 otherwise. Return the total number of province. A province is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside of the group. Okay, what are the, there are n cities, some of them are connected but some are not. If a city A is connected with a city B and city B is connected directly with a city C, then city A is connected indirectly with a city C. तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि if there is a node 0 and if node 0 is connected to node 1 and node 1 is connected to node 2, and since we can go from node 1 to node 2, node 0 is also connected to node 2 indirectly. This is not directly, this is इनडायरेक्टली। ओके, अब ये तो मैं किसी भी डीएफएस और बीएफएस ट्रैवर्सल से पता कर सकता हूँ ना कि मैं इस नोड से इस नोड पे जा सकता हूँ, तो ये कनेक्टेड है। और नंबर ऑफ प्रोविंसेस हमें काउंट करने हैं, तो इसमें जैसे 3 प्रोविंस है और इसमें 2 प्रोविंस है,
तो यानी ये एक प्रोवियंस है और ये एक प्रोवियंस है, राइट। और इसमें जैसे ये देयर इज नो कनेक्शन इन एजेस हियर, तो दिस इज what three separate province. This is a separate province, this is a separate province, and this is also a separate province. Okay, now what we need to do is count. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक डीएफएस स्टार्ट करता हूँ। मैं नोड जीरो से नोड वन जा सकता था, जैसे लेट्स जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, मैं नोड जीरो से नोड वन जा सकता था, नोड वन से नोड टू जा सकता था, और कहीं नहीं जा सकता था। अब मेरे पास एक प्रोविंस है नोड थ्री, नोड फोर, और एक सेपरेट प्रोविंस है नोड फाइव। तो ये मेरी पहली डीएफएस में आए, दीज वर द पार्ट ऑफ माई फर्स्ट डीएफएस। अब मैंने फिर से जैसे वेस्टेड वाला लास्ट केस में लिखा था ना कि इफ़ नॉट वेस्टेड, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ नॉट वेस्टेड तो स्टार्ट अ डीएफएस हियर। ओके, अब ये डीएफएस में क्या है, जितने जितने वेस्टेड हो गए, ओके, तो ये फोर तक विजिट कर पाया, तो ये एक सेपरेट प्रोविंस बन गई फोर तक। अब फाइव से एक डीएफएस स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ फाइव तक जा सकता है, और कोई नोड ही नहीं है, तो ये एक सेपरेट प्रोविंस हो गई। तो क्या हुआ, मेरे पास तीन सेपरेट प्रोविंस आ गई। तो हाउ मेनी टाइम्स वी कॉल्ड अ डीएफएस इज द नंबर ऑफ प्रोविंसेस दैट वी हैड। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है। बस ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं एक अनऑर्डर मैप में कन्वर्ट कर दूंगा फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओ आर डी ई आर ई डी मैप int comma vector int, call it mp. Now what I need to do is for int I is equal to 0 dot I is less than to take the size, right, it's connected size, or yes, n comma n key है matrix क्या, yes it is n comma n, okay, so then let's not to show that I plus plus for int j is equal to 0 dot j is less than n dot j plus plus. Now what I need to do is if is connected I j, then do one thing, push that, what I calling it mpi dot push back, what I need to push back, that is j, and from j what I can do is mpj dot push back, what push back, I, right, oh the spelling error, push back I. Okay, now what I need to do is need to call a simple DFS. So from here I will call a simple DFS for int I is equal to 0 dot I is less than n dot I plus plus। सारे एजेस सारे वर्टिसेस को विजिट कर लेगा आई लेस देन एन तक, यानी वन भी कॉल हो जाएगा, टू भी कॉल हो जाएगा, तो आई जे को कॉल करने की पार्ट नहीं ज़रूरत होगी। लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमें वेस्टेड भी चाहिए होगा, राइट, वेक्टर बूल विजिटेड, और कितने होंगे, एन कॉमा फॉल्स होगी, और उससे ज़्यादा क्या ही होगा, कॉमा फॉल्स। और क्या हुआ, इफ नॉट विजिटेड आई, अगर मैंने नोट आई नहीं विजिट कर रखा देन कॉल अ डीएफएस। अच्छा, डीएफएस कॉल करेंगे तो काउंट भी हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो एक मिनट काउंट बना लिया, ओके, नॉट विजिटेड, तो हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस में क्या पास कर देते हैं, हम अपना नोट पास करेंगे, मैप पास करेंगे, विजिटेड पास करेंगे, और कुछ पास करने की ज़रूरत है नहीं। और अच्छा, यहाँ पे इफ भी तो होना चाहिए था, I should have just removed this particular part. If not visited I call DFS, pass the I comma map comma visited, right, and do one thing, that is count plus plus. I am not declared count, I will declare it here. Okay,
apart from that, what I need to do is just return my count, right? After completing the for loop, I just need to do one thing, that is return my count. Okay, good. Now what is remaining in this particular piece of code, that is the DFS logic. What can be a simple DFS? It can be a simple void type DFS. There's nothing special in this DFS. So there's a void type DFS. I am passing a int node here, and I have a map int comma int p. Okay, and vector bool and the visited, right? Okay, what I need to do is just mark this particular node as visited. Visited node is equal to true. Now for auto x of this particular node, auto x of this particular node, start a DFS if not visited. This time I will type it carefully, x, then do what thing, that is DFS. Further, that is x comma mp comma visited, right? Good, great. Now what I need to do is nothing, right? I don't need to do anything further. Not visited, just do a DFS, and if visited, just mark this as true, and just count it the number of time you call the DFS. Now it should work according to me. Let's see where it takes me. And there's a compilation error because there is no n, and I think there should have been an n, but it is not there, so I have to take it. Int n is equal to is connected connected dot size. Wish there's no more spelling errors. Okay, the count is spelling is wrong. I knew it. So what? Okay, it is showing accepted here now. Where should show accepted is here, and here it is accepted. That is great. And we have solved one more problem today. It was a basic problem, but yeah, it's a great problem. Okay, now what we need to do is do more or do less. I think this video is already pretty long. We have solved three problems, understand some principles. I think we should solve more or we should solve less. It's going to be too soon. Okay, so it's going to be two. So I'm going to stop here, and we can solve more problems from tomorrow. Sorry for lacking on the number of problems that I promised to solve today, but at this particular moment, I need to just rest. I just need rest. So I will meet you guys in the next video. Thank you for watching.